Tsamala Jule, tene diringa tayang I video lecture penang fungi se sekolah ngata silchizano tene fungi ngata kenang rhizopus fungus rhizopus ngata kenang life cycle sekolah ngata silchizano tsama sanggoma ngata kenang rhizopus ngata fungus po kazuk shoot kya chinok zana hala. So rhizopus ngija tsangma thons do ngata braids kunikala ngata braids kun ngata moist chose bora champu tenete ngata cotton like fungus ngata grow chano onna ngata kenang rhizopus ngata fungus no te fe ngata rhizopus ngata braid mold sangata zano wala. So I diagram bagenge jastane utkan bo rhizopus no tene braid ngata kenang kazuk ngata rhizopus grow chet plus ngata त्यो ngata magnify choste ngata rhizopus structure punja stantano sonsale rhizopus is a common saprophytic fungi on plants and specialized parasite on animals. So I rhizopus pongata mangchat ponda saprophytic fungi on plants ka, that means plants ngata debris kunika plant dead plants kunika yangata plants ngata dead parts like leaves no hagwal ya fruits kunino ote kunika ta akena rhizopus ngata grow chano tene animals kunika including human beings I fungus ponda parasitize chano tene diseases ngata cause chano wala. So genus rhizopus ngata I Mucorrhizaceae family ngata fungi se Mucorrhizaceae family ngata belong chano Mucorrhizaceae family ngata akena Mucorrhizaceae orders ngata akena borte kya so sale. So kwe ngata substrate tana daksang da chik tana braids kuni no hala ka ngata kwe main substrate no rhizopus si tyoman pangata kenang I rhizopus fungus po fruits kunika vegetables kunika gems kunika ya tana sola leather ngata peanut tobacco hagol soil even soil ngata kenang grow chano. So ichhambe ngata kenang rhizopus si ngata species kun grow chano tene I rhizopus ngata kenang opportunistic fungi zano chief is ngata it causes diseases in human beings ngata jab I rhizopus ngata जुक्सपे का infection chua champo tene zygomycosis zirkani ngata kana zumo chono hagole zygomycosis bola dasada recently term jingata yushono mucormycosis zerte I mucormycosis pungija source do down ngata covid situation na kuba coming ngata covid yonsten te ona ngeja news na thons do ki black fungus zirkan ngata zomoji ontu zetala tena black fungus to lagata mucormycosis zano. So ote black fungus disease ponta kena rhizopus species unis ngata cause chono so sale ina ngata migi ka infection chono ngata throat se ngata infection chono. So mucormycosis ponta even fatal in wala zimoma sopono tene tyoman pa yang zimo chik diabetic ketoacidosis kan jagata I fungus pos cause chono kangota diabetic minguni nang keto acid mangpo produce cha chono hagole ote zimon kenata rhizopus ngata cause chono. So rhizopus species mangpo kya at least 8 species ngata ma common no tena na rhizopus stolonifer hagole rhizopus stolonifer bu kenata sangma sang common na best studied fungus no best studied ngata rhizopus species pono so sale. So next pongata atla che no singata kenang vegetative structure ngata ka jukshidu gala yani kwe vegetative hyphae ngata ka jukshidu. So young fungus unchok ngata pata no ki rhizopus ngata kwe bodies en hala kwe plant bodies expose na tene they consist of mycelium and hyphae hagole hyphae ngata chikchik na hyphae then group of hyphae to ngata mycelium zano ngata siltano. So rhizopus hyphae ngata ka jukshut kya hyphae and mycelium gunala they are differentiated into different parts hagole chikchik ta main hyphae kya main hyphae ka ngata का पार्ट पो सबस्ट्रेट का अटैच हो जैसे ngata ये फर्स्ट डायग्राम बिना तो दोले का पार्ट पो ngata सबस्ट्रेट पुछिनो ngata ब्रेड नो या ngata जेम्स नो या ngata ची न कोई सबस्ट्रेट पो ओते सबस्ट्रेट का अटैच हो ओते का ना ब्रांच्ड हाइफे रूट लाइक स्ट्रक्चर ngata प्रोड्यूस चनो तो ngata राइजोइड्स नो. So ote rhizoids po substrate nangkuga ngata fela chano
tene te anata nutrients ngata absorb chano main hyphae kana agole so rhizoids tene main hyphae kena ata rhizoids ka ngata produce त्यो मान पर बाकी पार्ट्स को निकना कोई सबस्ट्रेट खतोक नगाता ग्रो छनो हागोले तेरे त्यो लगाता चीज अनो स्टोलन जानो ओते स्टोलन बो सबस्ट्रेट खतोक नगाता ग्रो से यंग जगह जी गले बचांपु तेने ते का यंग सबस्ट्रेट का टेस्ट छनो सबस्ट्रेट का टेस्ट से नगाता राइजोइड्स प्रोड्यूस छनो तेने यंग आता केना ग्रो छनो सो ओ चलगाता फेला छनो हागोले दे आर इंटरकनेक्टेड यंग हाइफे चिक नगाता इनंग rhizoids is just opposite पे कहाँ था tuft of या group of hyphae कहाँ था produce जानो तो लगा था sporangiophore जानो हाँ गो साले sporangiophore कहाँ था tip part पे कहाँ था sporangium structure कहाँ था produce जानो कान अंकु कहाँ था spores produce जानो rhizopus से हाँ गो साले so ई कहाँ था कोई vegetative structure बो थोंसो नो कजुक शे कहाँ था क्या ना mycelium को तो चीची गा का mycelium कहाँ था rhizopus से नो तो बानो कला there tinangata kwe hyphae chikchiktana that hyphae is number 1 it is aseptate hagole filament is aseptate yani kwe junga ata kena septation met kya wall met kya bilkuli tene branch to kya hagole nispa branch then third point ata kena cynocytic cynocytic means kata san nazis bin ki जब hyphae ngata kena junga septation med na aseptate na tene kwe nucleus ngata kena तेने जगह चिक नगाता रोप होतनो हागोले ओ चोक्सी ngata aseptate hyphae multinucleate aseptate hyphae nगाता cynocytic hyphae जानो हागोले सो rhizopus ngata केनम ngeje e ना b डायग्राम बोलता ना a ngata छि दुगाता rhizoid स्थानते क्या stolon स्थानते क्या तेने b नंगेजे केनम branched hyphae कजुक्ष cynocytic ngata जो अच्छा septation में दा ओते hyphae ngeजे स्थानतनो हागोले तेने सेल्युलर पार्टी के छाना ई rhizopus ngata केना फंगस ई कोई सेल्स गुन या ngata हाफल सेल्स गुन कलता ना तेने सेल वॉल के समा सम पिलोगा हागोल सेल वॉल ngata कंपोजिशन बो चित क्या काइटिन एंड काइटोसिन सो ngata स्नन ना सेल वॉल कंपोजिशन सिल सनंग इजेस पिन की जागोमासिट सिना ngata केना काइटिन क्या प्लस काइटोसिन ngata मॉलिक्यूल्स क्या so rhizopus के नगाता जागोमासिट मेंबर्स इन बसंग ते फिंगाता चिनोक इका काइटिन जो क्या काइटोसिन जो क्या हाँ बोले सेल वॉल से ना तेने काइटिन ना काइटोसिन मान पायांगा ता प्रोटीन जो क्या लिपिड जो क्या कार्बोहाइड्रेट संगता युत क्या तेने ई सेल वॉल से नंकु बची युत क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थों दोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन अका डिस्ते so the plasma membrane again lipid bilayer plasma membrane no te nanku wangata membrane bounded organelles kunot kya organelles ka kamne no nucleus no mitochondria no endoplasmic reticulum no ribosomes no vacuoles no itsang mangata kya na cell nanku yut kya so this is about the vegetative part of the rhizopus ई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसको लगे दक्षताम जो जेस्कान मोंगे इन अंडिस्ते सोंगे जायुला तान अंडिस्तनो वन बाय वन देन रिप्रोडक्शन इन rhizopus अब rhizopus फंगस नता के ना reproduce चुनो by means of vegetative reproduction asexual reproduction and sexual reproduction हागवले so संगमा संगमा vegetative reproduction it takes place by fragmentation अब फ्रेगमेंटेशन गता पता नो फ्रेगमेंटेशन ची छानो प्लांट बॉडी गता ची फंगस बॉडी के नाता ब्रेक डाउन छानो इनटू डिफरेंट पीसेस एंड दैट पीसेस ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल सो फ्रेगमेंटेशन इन rhizopus occurs by accidental breakage of the stolon गता कोई हाइफी नो का मसीले में खतो ग्रो चकनी ओते हाइफी गता के नाम ब्रेक डाउन छा चंपो तेने ओते पीसेस गुन अगेन न्यू इंडिविजुअल ngata grow chono hagwal then we have asexual reproduction in rhizopus occurs by formation of two types of spores sporangiospores and chlamydospores अब sporangiospores chino chlamydospores chino hala इसका डिफरेंस पूछिए कैसे ना sporangiospores पौधा चिकपता favorable environmental condition of form chano निस्पा non motile thin wall spores no Hagul sumpa it is produced in a sporangium Hagul on the other hand chlamydospores pukinata they are thick walled asexual spore
thin wall mano thick walled asexual spores. Nispa, it is produced during the unfavorable environmental conditions. Third, it is not produced in a sporangium but by cleavage of the hyphae या mycelium. हाँ को सले. So ये आता sporangiosspore formation बच्चा एक detail ना आता है. ये diagram बंगे जा थोंग दोले asexual reproduction in Rhizopus by sporangiospores. So yun ang ata chano ki sporangiospores un kazuksha producer wala. So basang first ta ata diagram bolta na vegetative hyphae ka distot. Oti ang ata diagram bolta no Rhizopus ng ata kena kwe vegetative hyphae. A vegetative hyphae ng ata pata no, it consists of stolons, rhizoids and sporangiophore. Hagwale का पार्ट पे कहता है rhizoids produce उन्ना से opposite पे का मता क्या ना a tuft of group of hyphae are developed ओते hyphae लगाता चीज़ जानो खतो वालता सिंगा दान develop जानो तो लगाता sporangiophore जानो phore 4 जैसे कहता sporangiophore develops जो start चा जंपो जम सिंगा nucleus ना protoplasm मंगपो इखाला ओते sporangiophore ना को कहता move जानो main part पे आना main ngata mycelium भी आना hyphae आना sporangiophore yang tas ngata nucleus गुन्ना protoplasm गुन्ना ता move चोनो. हाँ बोले जैसे जैसे ngata sporangiophore वो माँ develop छा चंपो तेने चीज़ हरो कोई end part पो. हाँ बोले apex पो tip part पो swollen निगुरनो एक शिंगाता क्या ना swollen means कि एक शिंगाता क्या ना त्यो संस्कान जोक शिंगाता spherical type चिगुरनो. हाँ बोले तेने चामची गता न्यूक्लियस ना प्रोटोप्लाज्म गता ओते sporangiophore विना लेप्सोत ओते न्यूक्लियस ना प्रोटोप्लाज्म गता केना टिप पार्ट पिना टिप swollen पार्ट पिना कंसंट्रेट छानो. हागुले गता ओते न कलेक्शन चोक्षानो जैसे गता केना कंसंट्रेट छा चंपो concentration of the nucleus and protoplasm गता मांगपो छा चंपो टिप पार्ट पिना तेने गेजा डायग्राम सुंपे गलतोस्ते तेने तेना गता डिफरेंशिएशन छानो. हागुले differentiation of two layers ngata form chano peripheral layer kana ngata kena dakse nucleus na protoplasm ma mangpot peripheral layer thame layer wala tip ote swollen portion thame layer bo kana nucleus na protoplasm ma mangpot त्यौलंगता sporoplasm जानो. हाँ बोले sporoplasm बाकी part पोला चीज जानो ngata column मिलला जानो. हाँ बोले so column निल्ला ना sporoplasm. Now then what happens sporangium ngata kena ta takse tip portion bo swollen portion bo kana ngata two layers form so त्यो ngata chino sporangium bono. Ha gole sporangium form so so sporangium ngata peripheral layer bena kana ngata nucleus or protoplasm yot ote na ngata kena spore formation start chano jam shingata nucleus te jam shingata kena spores ngata form chano. So e third fourth ngata diagram bigalta na brown color oval shape structures ngata form so du gale oton chino spores no sporangiospores no ote sporangiospores जैसे ngata conditions ku ngata kena favorable yo da champo tene sporangium में wall bo ngata break chano spores ngata release chano release so se karu chano lungspen na का को केना सबस्ट्रेट चिक्थोबेत ते सबस्ट्रेट पे ग्रो छनो. हा गोले जैसे को ते स्पोर्स जर्मिनेट जो चंपो इट प्रोड्यूसेस वेजिटेटिव हाइफे. हा गोले तने वेजिटेटिव हाइफे गदा प्रोड्यूस जो चंपो ई साइकिल बंगता केना यंग गोना छानो. So this is how the sporangiospores are produced by Rhizopus. दक्षिण जगह मुझे ना पूरा डिस्ट्रिक्ट में जाएं सिलना डिस्ट्रिक्ट वाला तेरे क्लाइमेटोस्पोर्स पंगे लो malo क्लाइमेटोस्पोर्स पहुँचता क्या ना unfavorable environmental condition of form chano and they are thick wall and nutrient rich. हाँ बोले यूँ आता sporangium structure जी करना ना को produce चामनो but it is formed by cleavage of the hyphae या mycelium में आता क्या ना cleavage चानो या चिंगाता end part पे क्या ना चानो या में ना intercalary यूँ ना आता क्या ना hyphae break चानो का hyphae breaks on ote hyphae singata thick wall develop chano then it becomes a climatospores and these climatospores they start germinating when the favorable environment condition returns.
hagole jesse ngata conditions kun environmental condition ko germination ifya favorable gura jampo tene e climate spores ngata germinate chosinga ta kena new mycelium form chono hago sale. Then sexual reproduction in rhizopus. The rhizopus ngata fungus in sexual reproduction kazuk sheshano gala. So sama sangoma rhizopus they reproduced by gametangial copulation. Hagole ab gametangial copulation which you know it is a method of sexual reproduction. Jamata general characteristic cells ana fungus tene reproduction in fungus and jangata cells ana we studied the different methods of reproduction. Ija itu na ata gametangial contact zenches gametangial copulation zenches somatogametes zenches mapek masis pina so otiana gametangial copulation bukiana ata rhizopus na ata chano hagole अब ये gametangial copulation अच्छी छानो two gametangia male ना female gametangia क्या ना आता fuse सों से चिक गुरानो हाँ बोले so you कज़ुक शे गुरानो होता one by one step by step e diagram भी करना होता ताचे जनो so first आ corner भी करना होता ना rhizopus का vegetative structure बदो बोले mycelium rhizoids and sporangiophore हाँ गोसाले अब ये mycelium उनका rhizopus they are heterothalic. Rhizopus is a heterothalic fungus. Heterothalic जरा चीज़ होता है hetero means different, thalic means thallus. Thallus is referring to the mycelium. Thallus मतलब mycelium बजता नो हाँ बोले. So ओते mycelium वो different होता है यानी different mycelium होता है. Different mycelium means male ना female type चौशिक हाँ बोले इकांता नेगेटिव ना पॉजिटिव मैटिंग टाइप जरते दो आस्तापिका ओना चिक जैसे लेट्स से ngata नेगेटिव फॉर फीमेल इनो पॉजिटिव मैटिंग टाइप पो मेल इनो सो मेल हाइफे ना फीमेल हाइफे चोक ngata है क्या डिफरेंस ना क्या कोई न्यूक्लियस ना को ngata के ना डीएनए क्या ओते डीएनए से ngata डिफर छन हाँ बोले सो होता क्या है इसमें टू डिफरेंट माइसिलियम्स हाँ बोले ऑफ टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स दे स्टार्ट्स डेवलप्ड एंड comes close contact hagwal niska awo chokpona ingo chokpona ta develop chu start chwano tene mycelium bunga ta kena chikpon chikpinga ta contact yano hagwal ote developing mycelium bola developing mycelium bunga ta chi utya chik ta protoplasm na nucleus bunga ta well developed chano on both the types so this developing mycelium of the two mating types they are known as progametangia hagole niska hada progametangia zano male progametangia female progametangia ya mena ata mating type negative progametangia mating type positive progametangia so ote progametangia ata kenang develop cha champuchi chano niske na chamsing ata nucleus na ata dakse protoplasm unit tip part pinang ata concentrate chano niske hagole जैसे आता टिप पर पिना आता कंसंट्रेट छा चांपो देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा हाँ बोले इसके एंड पार्ट पे का आता सेप्टेशन फॉर्म छानो जब सेप्टेशन इज अ वॉल फॉर्मेशन हाँ बोले इसके जो आता वॉल फॉर्मेशन छाना सेप्टम फॉर्मेशन छाना तेने प्रोगेमेटन जे इसके एंड पार्ट पे का आता क्या ना स्ट्रक्चर जी प्रोड्यूस छानो डायग्राम इस पे का दो वाले स्पेरिकल स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियस इन द सेंटर gametangia zano so we have formation of male gametangia and female gametangia both ठीक है हमारा ले now next step होंगे चलता ना third fourth diagram बिका then these two gametangia of two different mating types they fused together so जब gametangia nis fuse चना आता तोला तेना cytoplasm को fuse सोंसनो तोला आता क्या ना चीज़ जानो plasmogamy जानो हाँ बोले so plasmogamy is son certain na gametangia is fuse son certain na चिक गुरानो खाला ते gametangia चिक चोस्पोला था zygosporangium जानो हाँ बोले अब zygosporangium में आता क्या ना इसके आना न्यूक्लियस लेप से क्या gametangia इसके आना मानोले male na female gametangia इसके आना न्यूक्लियस मांग पोलेप से क्या so this zygosporangium ये जो end part पे कहता ना zygosporangium structure तो बोले this zygosporangium is a multinucleate structure
hagol nucleus mangpo no all the nucleus they are haploid in nature hagol there tinachi chano then there is a fertilization means the fusion of nucleus the male and female nucleus the positive and negative nucleus hagol so e positive and negative nucleus sam shigyor na chik fusion se chi chano they form the diploid nucleus hagol so fertilization results in the formation of diploid nucleus in the zygosporangium. So this zygosporangium with different diploid nucleus they are known as zygospores. Hagol. So is zygospores pata thick wall spores ngata type form chano then this zygospores starts germination. Germination ngata जैसे कोई favorable environmental condition थवा चांपो germination start चोनो hagol germination start chona zygospores piano ata chi piano la zygospores piano hyphae piano hagol जैसे germination start cha champo nankuot kanata diploid nucleus po it undergoes meiosis nankuot kanata diploid nucleus mata chi chono meiosis song singata kena haploid nucleus form chono hagol so cham singata kena zygospores sigana germinate song se hyphae form song vegetative hyphae te hyphae unchi no ata haploid hyphae no again ode haploid hyphae ungata kena further koi grow song se rhizoids form chono stolon form chono tene khato alta singata kena sporangiospore form chono ode sporangiospore inankuga sorry tip part pikata sporangium form chono sporangium inankuga ta kena sporangiosspores ngata form sonstono hagol tenete kana da yang cycle bongata kena repeat chano hago samangol so this is ta kena ngeja chamji daksang yelo inange step by step distio ngeja hard copy kana sinal distano ha mangona of reproduction, sexual reproduction, asexual reproduction, vegetative reproduction one by one. I hope you understand all these details about the rhizopus. So if you have any doubt, any questions, you can let me know. You can message me, call me anytime. Thank you so much.